Yo guys, what's up? I hope you're doing good. So welcome back to my YouTube channel. So as you know that we are about to complete the error and exception handling in Studio, and we're going to be covering the continue on error property in this video. Right, so let's get started guys. So guys, about this property, it is a type of Boolean property, right, which accepts true or false arguments, right, obviously of Boolean type. So what it will be doing if an activity or a group of activities is throwing an error. So if we have checked continue on error property, so the workflow can continuously run until the end of the workflow and it won't be throwing an error. Like our workflow won't be getting uninterrupted. Right. To demonstrate this, I have devised a plan for you guys inside UiPath Studio. Right, so we will be using the chapter 66 video in our zero to hero series guide. We have come a long way, right? And so I am using a use application browser activity, and inside of this I have to just type a first name, and the site that we are using is the rpchallenge.com, right? So I'll be typing check, for example. If I'll be clicking this card of the use application browser activity, so you on the right hand side you can see the continue on error is showing as true, right? And I will be using never, and let's quickly run the workflow, and I'll also be indicating the timeout over here. So the timeout will be 2 seconds. In 2 seconds, it will be throwing an error over there, right? सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, इसने यहाँ पे क्या किया, इसने हमें एरर नहीं दिया है. एंड व्हाई इट डिडंट थ्रो एन एरर, मतलब मैं आपको बताता हूँ. जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा आपका स्टेप इन टू गोइंग साइड ऑफ इट, एंड उसने वो बॉक्स है नहीं खोला है, राइट? एंड इफ आई विल बी यूजिंग ओवर देयर, आई विल बी यूजिंग, आई विल यूजिंग दिस बार ओपन if not open, and now I'll be running it. So the browser is being opened now, right? But what I am doing, I am just closing the browser. मैंने ब्राउजर को फिर से क्या है क्लोज कर दिया है, ठीक है. एंड जो इसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, दैट इज द फर्स्ट नेम, राइट? I will be giving it a timeout as well of 2 seconds, right? Step into again. सो एज यू सी दैट यहाँ पे मेरे पास कंटिन्यू मैंने जैसे प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पे एक क्या है, एक एरर आ चुका, राइट? बट वी हैव यूज्ड दिस पार्ट एज वेल ओवर हियर दैट कंटिन्यू ऑन एरर मीन्स टू, if this activity fails means this activity, if this activity is failing, right? So it won't be throwing an error. But if this activity is failing, then it will be throwing an error, right? I'll be using this as well over here, and I'll just remove the boolean part and just do it as message, right? And now if I'll be using step into, it has opened. I'll just quickly close it, step into again. So as you saw, as you saw that we have applied the continue error or property error, continue or error property over here in the type first into name. So it will be going ahead and it won't be throwing an error over there, right? So it is a very a simple activity. Let's quickly go inside the UiPath Studio. Activity through the error, okay, supports boolean value, right? Yeah.
When the continue errors property is set to on an activity that has a scope, any errors thrown by the activities within the scope's do container will also be ignored. This means that even if an error occurs within the scope, the execution will continue without stopping. Right? So, so I guess guys आपको समझ में आया होगा कि हमने continue on error property कैसे यूज की है यहाँ पे. Right? We have used it over here. हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है? Right? And whenever we are opening our workflow, we will be just using delay just to demonstrate the continue on error property guys. So यहाँ पे हम लिख रहे हैं 0, 0, 0, 0, 2. For 2 seconds, there will be a delay. In that delay, I'll be closing the browser. ठीक है, ब्राउजर मैंने बंद कर दिया है. एंड जैसे ही मेरा ब्राउजर बंद होगा यहाँ पे एक एरर आना चाहिए था बिकॉज फर्स्ट टाइम उसको एक्टिविटी यहाँ पे नहीं मिली. इसका टाइम आउट ही मैंने यहाँ पे 2 सेकेंड लिया बट द एरर डिडंट केम बिकॉज वी हैव यूज कंटिन्यू ऑन एरर. ठीक है. वन मोर क्विक थिंग गाइस, अगर इसको हम यूज करते हैं आपके ट्राई कैच के अंदर, if this activity is included in the try catch, in the try section, if an activity is included in the try catch and try section, and the value of the continuous error property is true, no error is caught when the project is executed. Means, for example, हम लोगों ने एक कुछ रखा है यहाँ पे लाइक यूज एप्लीकेशन अगेन वी हैव यूज्ड एंड हम इस पे इंडिकेट कर रहे हैं something like that, not this. Let's do again this part. डिलीट नहीं करना चाहिए था. ठीक है, नो इश्यूज. सो हम फिर से यहाँ पे यूज कर रहे हैं. अगेन यूजिंग दिस पार्ट, क्लिक टू सेलेक्ट ब्राउजर. ठीक है. एंड अब मैं यहाँ पे फिर से कुछ टाइप इनटू कराने की कोशिश कर रहा हूँ. राइट, अगेन आई एम टाइपिंग इट इनटू द फर्स्ट नेम, collecting the target information. I don't know, it takes some time whenever it is collecting target information for the first time. Rest it is. ठीक है. अब ये पूरे पार्ट में मेरे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है. फॉर एग्जांपल ये इसमें एरर आ रहा है तो मैं यहाँ पे से कंटिन्यू रख देता हूँ एंड आई थिंक वी डोंट हैव टू डिलीट द पार्ट एज वेल. 0 3 or you can say 0 2 seconds. Right, it is 0 2 seconds over here. ठीक है. सो नाउ व्हाट विल बी डूइंग, टाइप इनटू फर्स्ट नेम. यहाँ पे फर्स्ट नेम मैं टाइप कर रहा हूँ बट अगर मेरे यहाँ पे एरर आ रहा है तो मैंने क्या किया, इस पार्ट को उठा के मैंने डाल दिया आपके किसमें, आपकी ट्राई कैच. मीन्स वी आर यूजिंग ट्राई कैच इनसाइड ऑफ दिस पार्ट. अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू और एरर रख रहा हूँ ट्रू. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कंटिन्यू एरर रख रहा हूँ ट्रू. और अब अगर मैं कैच यूज करता हूँ आपका, so I'll be just using log message activity over here guys. इसमें मैं करूँगा आपका log message activity use just to demonstrate you guys. Log message, right? And XYZ, something something is here. Leave it like this. Okay. Now if I will be running, sorry, be running my workflow. Let's first quickly run it in the debug mode, guys. Debug में चलाता हूँ. अच्छा, पूरा का पूरा चल गया है. Just 1 second. Yeah, now it is not there. So I think the timeout will be too high for this. Yep, timeout में थोड़ा छोटा कर दूँ. Just 1 second, guys. So I'll be giving the timeout 2 seconds so that the error will be thrown quicker. Right, debug.
Now, so challenge. Sorry. So now the first name is getting found again and again. Just 1 second. We are just simply setting it 4 seconds. Now if I've been running the workflow, yeah. Now I have closed the browser, right? So as you can see, what? As you can see that the error was not caught. अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ and now if I'll be running my workflow, अगर मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर को बंद करता हूँ, so obviously it won't be finding the type into part. ठीक है, जब उसको type into नहीं मिलेगा तो obviously it will be going to the catch part. जब यहाँ पे catch पे जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा log message को उसने रखा. So means I hope that you are getting my point. क्या हुआ है यहाँ पे. तो अगर मेरा जो continue on error property है, if it's inside, if any activity inside the try box and उसमें continue on error property is set to true, so there will be no error caught and it won't be going to the cancel section, right? I hope this is very clear, guys. ठीक है, very simple activity. So let's quickly go to the check knowledge part. What happens if the continue error property set to true? The activity stop executing throws an error. No execution version due to an error. No execution of the project continues regardless of any error. Submit. We are very right and very true. Okay, now we will be doing some 10 good questions, guys. Okay, and we'll be completing our module in today's video. First question will be, which exception is being described by the following statement occurs when using a variable with no set value not initialized. So I have already told you to go with the approach of first negating your wrong answer. हम नेगेट करेंगे रॉन्ग आंसर्स को पहले कि भाई ये नेगेट है, रॉन्ग आंसर्स को नहीं लेंगे. Null reference selection may be business rule exception. No, ये occurs when using a system with a variable with no set value. Means the variable is not initialized. Selected not for no, application exception no. फिर obviously the select part is this. Null reference exception means our variable is not being initialized. Okay, next part. Match the activity with its correct information. So you have to match all these error handling activities with its correct information over there. So throw, this activity is used when the intended action is to throw an exception. Throw an exception. It is this try catch where a common use for this activity is for when catching an exception for a particular action. Okay, I'm not sure about this. This activity doesn't throw exceptions unless the number of retries which it reached. This part will be this retry scope. तो यहाँ पे दो बचे हैं try catch and rethrow. This activity requires at least one catch to be added, try catch, and the rest will be this, right? We are very right. Okay, next question. Which of the following is recommended to have a catch in to recommended to have in a catch block? Means catch block के अंदर क्या होना चाहिए? There is no need to add an activity in the catch block. No proof. The activity performed which has a chance of throwing an error that is should be inside of a try block. A log message activity, yes, and since it is multiple choice, so we can select two options. लिखा भी है two यहाँ पे two options. And the activity or set of activities to be performed when an error occurs. So this will be it, right? Next, review question. To use a selector in the selector property of an activity, you can store it in a variable. What's the variable type? So जो वेरिएबल टाइप होगा हम जो सेलेक्टर को आपकी यूज करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में, तो वो क्या वेरिएबल टाइप होगा दोस्तों? तो गाइस द राइट आंसर विल बी स्ट्रिंग. सी इन 32 कांट बी इट, बूलियन आंसर नहीं हो सकता. इट विल बिटवीन द फाइट इज बिटवीन यूआई एलिमेंट एंड द स्ट्रिंग. विल बी यूजिंग स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ यूआई एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट. Fifth question, 5 more to go. What does it imply when the retry scope activity is used without a termination condition? Means कुछ condition हमें नहीं दी गई है. So the right answer will be
The retry scope retries the activities until no exception occurs or the number of provided attempts is succeeded. Exceeded means यहाँ पे ये इसका मैकेनिज्म है रिट्राई स्कोप का, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा रखा है in my previous videos. So guys, please don't forget to watch all those. Which of the following methods can be used to populate a list of string type variable with the values John, Paul, George, and Ringo? Guys, please remember this will be a type of a list variable. Okay. Set the default value in the data manager panel to John, Paul, George, Ringo. No. Set the default value in the variables panel to new list of string from John, Paul. This will be it. Leave the default value blank and add to collection map. Initialize the, because हम default value blank जैसे हमें instantiate करना पड़ेगा like this. Initialize the variable with new list of string and build collection activity. Operate to this submit. Yes. Right answer. You have more than one exception type defined in the catch block, and an exception occurs that fit two types. Which of the following exception block is executed? So guys, दो टाइप के एक्सेप्शन है, ठीक है। एक आपका है डिफाइंड मोर देन वन एक्सेप्शन डिफाइंड एंड एन एक्सेप्शन फिट्स टू टाइप्स। एक्सेप्शन है वो दोनों टाइप में फिट कर रहा है, ठीक है। that can be system dot exception, and one can be selected or found exception अगर वो आपका one is a generalized and one is very specific. तो ये कह रहे थे block with the most specific match इसको डिटेक्ट करेगा, is the block with the most generic match. So guys, the answer will be the block will be both block with the most specific match. Okay, it will be very specifically searching for the specified exception only. Which activity is being described by the following statement? When checking with whether a particular condition is met, only activities that return a Boolean value can be used in the condition block. Example is true, is false, element exists. Means जब भी इसकी कोई कंडीशन मेट होगी या हम चेक कर रहे हैं एक कंडीशन मेट हो रही है कि नहीं, सिर्फ बूलियन एक्टिविटी आपकी यूज हो सकती है इस कंडीशन ब्लॉक। तो इफ में कंडीशन ब्लॉक होता है, इफ में कंडीशन बार होता है, ब्लॉक तो नहीं होता है, इफ में कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है। इफ में आपका आपका होता है देन और अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, नहीं होगा तो ये। स्विच में देयर इज नो कंडीशन ब्लॉक्स, ट्राई कैच में देयर इज नो कंडीशन ब्लॉक, तो कहीं बचा क्या रिट्राई को। तो आप ऐसे करेंगे ना अगर एग्जामिनेशंस में, फर्स्ट नेगेट द रॉन्ग आंसर्स, then switch towards the right answer. What is the most effective way to handle the click on a UI element that is not always available? Means ऐसे कौन सा तरीका है जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं आपका क्लिक ऑन अ UI एलिमेंट जो भी कभी हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। Place the click inside a try catch, maybe use element exist and then click activity, not so effectively. Find element name, set the continue property of the click activity to true. Guys, the first part will be your right answer because it's a best practice to use try catch whenever we are expecting an error from the specific property. How can you ensure execution continued even if an activity fails? अभी मैंने आपको बताया है set the continue on error property to true, और क्या कर सकते हैं सराउंड द एक्टिविटी विथ अ ट्राई कैच। क्यों गाइस थ्रो एक्टिविटी एक्सेप्शन बनेगा, इंक्रीज टाइम और ड्यूरेशन से ऐसा नहीं हो सकता। डिले प्रॉपर्टी फॉर द एक्टिविटी तब भी एरर तो वो देगा ही देगा। सो इट path and we are again correct 100% correct. So we have completed all this parts and we have completed our module. So guys, in the next part I'll be giving a quick sneak peek कि हम क्या करने वाले हैं in the next section, right? So please be with me. So we will be doing working with the local files and folders in Studio, right? So let's see that हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम इसको कब तक complete करेंगे हमारे चैनल में। Approximately time I'll be giving you guys, okay? Loading. I hope आपको continue error property समझ में आएगा। It's very simple guys, very simple property. Okay. So activities method local files and folder, ठीक है। There are some quickly
जनरेटेड एक्टिविटीज ओवर हेयर, कॉपी, क्रिएट, डिलीवर, जो आपकी लोकल फाइल है उसके कैसे मूव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, रीनेम, ब्राउज, अगर कहीं आइटम है कि नहीं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल गाइस टू बी वेरीफाइंग कि हर मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल बी कमिंग इन योर एग्जामिनेशन, बट सम मॉड्यूल्स आर मोर इम्पोर्टेंट, जैसे पिछले वाला था एरर एक्सेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, तो वील बी स्टार्टिंग वर्किंग विद लोकल फाइल्स एंड folders in the studio in the next module. उसके बाद का ही मैं आपको बताया था because this model will be taking two maximum three videos, right? So most probably we will be using, yeah, we'll be doing email automation, very important, and PDF as well after that, and that the list will be going on and on and on, right? And after that we'll be starting automation developer professional course as well, right, over there. So very interesting part guys, बहुत मजा आएगा आपको इसमें. अभी right now we are doing ADA because we are following the academic courses, and we are following the ADP training, automation developer professional training as well. Right, so I hope आपको guys समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe for my daily updates on my channel. We are aiming for a daily videos. कभी कभी videos नहीं आ पाते हैं daily, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए क्योंकि sometimes I am busy as well, but you know कभी कभी मैं टाइम निकाल लेता हूँ, so I'll be uploading the videos on a daily basis, right? Thank you so much guys for being here, and as always, keep learning.